Good afternoon, everyone. This is Nehal from Goenkan Prime TV with latest news headlines. Here are some international news. Overseas Indians have taken the first initiative for the development of Indian cities. Under this, he has announced to give 100 million US dollars for the startups of social and economic development of Amritsar. Now some national news. The results for class 10th and 12th will be released soon by CBSE. It is written on the portal that the results can be released after 20 May. From Sports World, England's lethal spinner Josh Baker passed away. He breathed his last at the age of 20. However, the cause of his death has not been revealed yet. This incident has caused a wave of mourning in the cricket world. Now some local happenings. The applicants expressed their anger by raising slogans against the administration and the government over the lack of work related to permanent driving license in the sub-divisional office, Kalawali, for the last 2 months. Let's know our weather report. The weather in Sissa today is expected to be sunny with a high of 41 degrees Celsius and a low of 24 degrees Celsius. Some Goenkan news. Goenkans engage in diverse class activities marking April as English month, fostering language proficiency and cultural appreciation within the school community. Now over to Hindi news. नमस्कार, मैं कोहिनूर स्वागत करती हूँ आपका हिंदी समाचार के साथ। पेश है कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रवासी भारतीयों ने भारतीय शहर के विकास के लिए पहली पहल की है। इसके तहत उन्होंने अमृतसर के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्टार्टअप के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। बोर्ड के रिजल्ट पोर्टल पर लिखा है कि CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे 20 मई के बाद जारी किए जा सकते हैं। अब बारी खेल जगत की। इंग्लैंड के घातक स्पिनर जोश बेकर का निधन हो गया। उन्होंने 20 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। हालांकि अब तक उनकी मौत का कारण सामने नहीं आया है। इस घटना से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। उपमंडल कार्यालय कालावाली में पिछले करीब 2 माह से स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य न होने पर आवेदकों ने प्रशासन व सरकार के प्रति नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया। मौसम का हाल इस प्रकार है। आज सिरसा में मौसम धूप वाला रहेगा और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गोइंकन समाचार। गोइंकन्स ने अप्रैल महीने की अंग्रेजी माह के रूप में मनाते हुए स्कूल समुदाय के भीतर भाषा, दक्षता और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। धन्यवाद। बने रहिए पंजाबी समाचार के लिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਸਨੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। पोर्टल ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CBSE बोर्ड 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸਪਿਨਰ ਜੋਸ਼ ਬੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਲਚਲ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਇਨਕਨ ਨਿਊਜ਼। ਗੋਇਨਕਨਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੋਇਨਕਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। नमस्कार है अहम महाना इसमें संस्कृत समाचार है। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता।
भारतीयनगराणां विकासस्य विदेशीय भारतीयानां प्रथमः उपक्रमः कृतः अस्ति। अस्य अनन्तरं सः अमृतसरस्य सामाजिक आर्थिक विकासस्य स्टार्टअप संस्थानां कृते $100 अमेरिकी रूप्यकाणि दातुं घोषितवान् अस्ति। राष्ट्रीयवार्ताः। 10-12 कक्षायाः परिणामः शीघ्रमेव केन्द्रीयमाध्यमिक शिक्षामण्डलेन CBSE प्रकाशिताः भविष्यन्ति। बोर्डस्य परिणामपोटे लिखितम् अस्ति यत् CBSE बोर्डगृहस्य दशमस्य कक्षायाः च परिणामः विंशतिदिनाङ्कात् परं विमोचयितुं शक्यते। क्रीडाजगतः अस्ति। इंग्लैण्डस्य खादकः स्पिनरः जोश बेकरः स्वर्गं गतः। सः 20 वर्षे अन्तिमश्वासं गृहीतवान्, तथापि तस्य मृत्युकारणम् अद्यापि न प्रकाशितम्। एषा घटना क्रिकेट जगति शोक तरंगं जनयति। स्थानीयकार्य पश्यामः। आवेदकः विगतस्वेन भागिकार्यकले कलानवाल्यां स्थानीयवाहन चालन नुज्ञापत्र संवर्धकारस्य अभावे प्रशासनस्य सर्वकारस्य च विरुद्धं नारा उच्यमानाः आक्रोशं प्रकटितवन्तः। मौसमः एवम् अस्ति। अद्य सिरसानगरस्य आकाशं सूर्यं भविष्यति, यत्र अधिकतम तापमानं 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमानं 24 डिग्री सेल्सियस च भविष्यति। विद्यालयस्य वार्ताः। गोयङ्काः जनाः विविधवर्ग क्रियाकलापे संलग्नं भवन्ति। एम्री पासम् आङ्ग्लमासं मासरूपेण चितवन्तः विद्यालय समुदायस्य अन्तः भाषाप्रवीणतां सांस्कृतिक प्रशंसा च पोषयन्ति। धन्यवाद। अब खबरों का प्रसारण जर्मन में। Guten Tag, ich bin Suviti. Heute Nachrichten ist internationale Nachrichten. Übersehende haben die erste Initiative für die Entwicklung in der Stade erfüllt. Da hat angekündigt, $100 Millionen für Staatssorgsondeln und visuellen Entwicklung Amritsar-Bisland. Nationale Nachrichten. Die SBN für die 10. und 12. Klasse wurden in Kusbun von CBSE veröffentlicht. Dem Portalste, dass die Ergebnisse nach dem 20. Mai veröffentlicht wurden können. Kurznachrichten. England Toddler Spinner Josh Baker ist verstorben. Seine Eltern Ethanzig gab im Alter von 20 Jahren. Die Todesschütze ist John Notch nicht Bacon. This Waffle hat in der Cricketwille eine Welle der Trauer ausgelöst. Lokale Nachrichten. Die Eintracht-Köln brachen ihre Wut zum Zahn, indem sie Slogans gegen die Wafflung und die Rebellen sah. In der Unterblicksen Kalavali in den Klexeten sein, Monten und zusammen mit der Erlong ins Dorhan Fuschen mangelte. Wetternachrichten. Das Wetter in Sissau wird heute with sonnig mit höchsten Temperaturen von 20 degrees Celsius and tiefsten Temperature von 10 degrees Celsius. Goenkan Nachrichten. Goenkans Battling Shit and Windflong Unterstützung und beginnen April als Englisch Mord wurde die Sprechenden und die Kurate Beschlossung innerhalb der Schlungen gefordert wurden. Vielen Dank, goodbye and have a nice day.